हेलो फ्रेंड्स। आई होप आपका अकाउंट का पेपर अच्छा सा गया होगा। अभी आपकी बारी है लॉ के पेपर की। तो लॉ के पेपर की जल्दी से तैयारी करते हुए हम ये जानते हैं पहले चैप्टर के सारे सेक्शन हाँ पहले चैप्टर के सारे सेक्शन। कौन सा पहला चैप्टर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें से आपको तकरीबन 30% तक पूछा जा सकता है इस वाली एग्जाम में। तो इसमें सारे चैप्टर के आउटलाइन देख लेते हैं, यानी कि टॉपिक सेक्शन वाइज देखते हैं कैसे रहेगा। ऑफर और प्रपोजल सेक्शन 2 क्लॉज ए रहेगा। प्रोमिस सेक्शन 2 क्लॉज बी। एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच। प्रोमिसर और प्रोमिस सेक्शन 2 क्लॉज एच सी। कंसिडरेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी। और void agreement section 2 clause void agreement section 2 clause G. voidable contract section 2 clause I. void contract section 2 clause J. ओके सॉरी ओके अच्छा सॉरी। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10। सारे के सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में आ चुकी हैं। तो ये सारी डेफिनेशन हमारी रहेगी और ये सारे हमारे सेक्शंस रहेंगे। ओके, तो इसके बारे में अगर आप इसकी लिस्ट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो साथ में। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट सेक्शन 56। एग्रीमेंट वॉइड एंड अनसिक्योरिटी uncertainty. Agreements void for uncertainty. Section 2 clause 9. Classification of contracts section 2 and section 9. कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन रहती है हमारी वो भी चलती है और इसकी सेक्शन 9 में जो आती है वो भी चलती है। मोड ऑफ मेकिंग एन ऑफर सेक्शन 9। लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस सेक्शन 7। okay, communication when completed section 4. Time limit for revocation section 5. Exception to the rule no consideration and no contract section 2 section 25. Person to unsound mind section 12. Coercion section 15. IMP section A. Undue influence section 16. Fraud section 17. Misrepresentation section 18. Mistake section 20 and 22. Unlawful object and consideration section 23. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। एग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट सेक्शन 24. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड section 27. Agreement in restraint of marriage section 26. Agreement in restraint of legal proceeding section 28. Wagering agreement section 13. Contingent contract section 31. Rules regarding contingent contract section 32 36. Supplies of necessities to person incompetent or to contract सेक्शन 38। ओके फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं आगे के सेक्शन की। ओके, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, डन। पेमेंट बाय पर्सन हु इज इंटरेस्टेड ऑफ ट्रांजेक्शन सेक्शन 69। फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 71। Money paid under a coercion mistake section 72. Okay, performance of joint promises section 42. Appropriation of payment section 59 to 61. Discharge by performance section 37 to and 38. Discharge by impossibility of performance section 56. Discharge by mutual agreement by section section 62 and section 63 दोनों चलेगा। काइंड ऑफ रीच सेक्शन 39। रिसेशंस सेक्शन 39। suit of damages section 73. इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी सेक्शन 1 to 4, यानी कि सेक्शन 124. राइट्स ऑफ इमीडिएटली होल्डर सेक्शन 125, यानी कि 1 to 5.
एसेंशियल्स एंड वैलिड रूल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर गारंटी। पाँचों के पाँचों सेक्शन, सॉरी चारों के चारों सेक्शन आपके लिए IMP है। 1 to 6 यानी कि 126, 127, 142 एंड 143। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटीज सेक्शन 129। कंटिन्यू गारंटी सेक्शन 129 एंड 131। राइट्स ऑफ श्योरिटीज चारों के चारों सेक्शन आपके लिए IMP है। कौन से 140, 141, 150, 145, 147। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी 130 एंड 139। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेलमेंट सेक्शन 148। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सेक्शन 148। मोड्स ऑफ डिलीवरी सेक्शन 149। ड्यूटीज ऑफ अ बेलर section 150, section 158, section 159 to section 164. Okay. Duties of bailing. Rights of bailer section 153, section 159, section 163, section 18, section 81. Okay friends, rights of bailing section 165, 167, 117, 118. Termination of bailment section 153, section 159, section 162. Meaning of leads, frown and pony section 150, sorry section 172. Essentials of valid contract for players section 172. Rights of pawners, rights of pawners section 177. Duties of pawners section 175. Introductions of contracts of agencies 180, section 182. Silence features of agencies section 183, 185, 126, 226. Introduction of contract of agencies 183, 185, 226. Silence features of agencies हो गया। Modes of conversions of agency, modes of creations of agencies 187, 189, 196, 21, 200, 214, 273. Essentials of valid rectifications 198 and 200. Okay friends. Okay, done. Duties of an agents. Section 209, 218. Rights of an agents. Section 217, 220 and 225. When an agent is possibly liable. Section 230 and 231. Okay. Agency coupled with interest. Section 202. Irrevocable agency section 202 and 204. Diligence of authority, delegations of authorities section 119. Termination of agency section 201 and 210. तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सॉरी ब्लर हो गया। हेलो। ओके, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आई होप आपको लॉ के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और बेस्ट ऑफ लक लॉ के पेपर के लिए। और मैथ्स में भी आपको फॉर्मूला सेट्स वगैरह चाहिए और दूसरे एक्ट्स के भी आपको ऐसे ही सेक्शन वाइज वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।